Hello friends, hope all of you are doing good and welcome back to my channel. Today I'm going to show you some hidden features in Ford Fiesta Classic. तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको few features which many of you might not know that these features are available in the car. तो चलिए दिखाता हूँ मैं this hidden features जो available है गाड़ी में. Usually हम जब गाड़ी खोलते हैं तो with this opening of the key all doors open. See, this door is opening, this door is open. Now there is a feature in this wherein we can make only one door, that is driver side door, open and rest all the three will be closed. And अगर जब आप डबल ओपन दबाएंगे तब ऑल द डोर्स विल ओपन विद अ सिंगल क्लिक ओनली द ड्राइवर डोर विल ओपन. आपको अभी वो एक्टिवेट करने के लिए क्या करना है, यू नीड टू प्रेस बोथ द ओपन एंड क्लोज बटन टुगेदर till you see a indicator lights flashing. So now you have seen that indicator light flashing. Leave this thing. Now you try to open the door. अब आप देखेंगे तो this door is opening. See, this door is not opening. I'll again lock it and again I'll press. This door is opening. This is not opening. Now to open all the four doors, you need to double click the open button. So all the four doors have opened up. See, this is opened. This is also opened. So all the four doors have opened. You lock it and all the four doors have got locked. To reverse it, again you need to do the same thing. Press both the keys together until you see the indicator light flashing over there. See, you saw that flashing. Leave it. Open it. See, this is opened. This is also open. Now let me lock it. Opening it up, all the four doors have opened. So this is one hidden feature in the car. Now I'll show you the second hidden feature. Hidden feature I wanted to show you is the meters. तो मीटर में यहाँ पर जो रीसेट बटन दिया हुआ है, you need to just hold it or press it and while the car is off and then switch on the car, that is गाड़ी engine on नहीं करना है, just keep it at ACC level. तो just press that and put on your car. And you see there's a test gauge started. All your lights have come up. आप देख सकते हैं. So now you can just press this. See, all your मीटर के जितने रीडिंग होते हैं वो सब इसमें आ गए बीच में. Then you can see LED, all the lights coming up. जितने भी लाइट्स है गाड़ी के अंदर में जलने लगे हैं. Then these are some errors दिखा रहे हैं. There's some error showing in the car. So I'll show you all. बहुत सारे हैं. So you can check आपके गाड़ी में कोई दिक्कत है कि नहीं. It'll show you all error. आपके गाड़ी के अंदर में जो भी फीचर्स अवेलेबल है सब इसमें ये दिखा देगा अगर आप ये करेंगे. Now to switch this off, you just need to switch off your car button and then you on it. It is back to normal. So this was the second feature what I wanted to show. I don't know how many of you know about this, but ये feature मुझे दिखा तो I thought why not share with you all of you. So यही था दो फीचर्स मैं जो आपको दिखाना चाहता था. हिडन फीचर्स है जो शायद काफ़ी जनों को नहीं मालूम होगा.
सो ये दिखा करके आई होप दोज हु ओन दिस कार कैन एक्टिवेट दिस फीचर, यू नो, एक तो रिमोट का, एंड देन दूसरा वाला फीचर नहीं, इट्स अ सीक्रेट दिस थिंग वेर इन यू कैन check is there any error in the car or not, but then you need to know all the readings what is coming down, which I personally, if you ask me, I don't know. नीचे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई आ रही थी which I don't know. अगर आपको मालूम है तो आप ज़रूर से बताइएगा क्या क्या रीडिंग आ रही है और वो काय के लिए, एंड यू कैन जस्ट मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स. तो बस आज के लिए इतना ही. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर से शेयर करिए, लाइक करिए, एंड अगर आप नए हो मेरे इस चैनल पर तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिए. सो अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, वेयर योर सीट बेल्ट्स, ड्राइव सेफ एंड एन्जॉय योर ड्राइव. बाय बाय.